Hello, students. Welcome you all to our first session of our chapter number 9 Heredity and Evolution. Yes, students, today we are starting with our new chapter of biology section, that is Heredity and Evolution. Our today's first topic is heredity. What do you mean by heredity? The transfer of characters or traits from the parents to their offsprings is called heredity. The transfer of characteristics from the parents to their new young ones. Offsprings means what? New young ones. Okay, the transfer of characteristics from the parents to the new young ones is called heredity, and these characteristics are also called traits. अभी से अगर traits वाला word आता है, it means characteristics. Okay, students, so once again, what is heredity? The transfer of characters from the parents to the new young one, to the offsprings, is called heredity. Then comes variation. What do you understand by the term variation? The difference between the characters or traits among the individuals of the same species is called variation. Now you can see that कि भाई एक ही स्पीशीज के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, ओके, देर आर वेरियस इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, बट दे आर नॉट लुकिंग अलाइक. सबके सब एक जैसे नहीं होते. देर आर सम डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, जैसे हम हमारे ह्यूमन बींग्स की बात कर ले. ओके, सम ह्यूमन बींग्स आर टॉल, सम आर शॉर्ट, सम आर वाइट, सम आर डार्क. ओके, सम आर फैट, सम आर थिन. तो देर आर सम वेरिएशंस इन दिस individuals of the same species, and these differences are called variations. What are it called? Variations. The difference between the characters or traits among the individuals of the same species are called variations. Okay, students? Now, students, as I have already explained you the meaning of heredity. Heredity means what? The transfer of characteristics from where? From the parents to the offsprings. And how are these characters transferred from the parents to the offsprings? Through DNA copying. Through DNA copying. What is DNA? Deoxyribonucleic acid. And where is this DNA present? DNA is present in the chromosomes. And where are the chromosomes located? Chromosomes are present in the nucleus of a cell. Okay, we all know that all organisms are made up of what? Cells. Okay, these cells consist of nucleus, and each nucleus consists of what? Various chromosomes, and DNA is present on that chromosomes. So when the new young one is born, the DNA copying takes place. Okay, parent का DNA का एक replicate, the replica of the same copy of the DNA from the parent comes in the new young one. But sometimes what happens, there are some accuracies during the DNA copying. जब DNA की copying होती है तब कुछ इनएक्यूरेसीज आ जाती है, कुछ एरर्स आ जाते हैं, जिसके कारण जो न्यू यंग वन है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता है पेरेंट से. अंडरस्टूड? एग्जैक्टली सेम नहीं होता है विद देयर पेरेंट. ओके, देयर आर सम चेंजेस इन द न्यू यंग वन as compared to their parents. Okay, and these variations are very less in asexual reproduction than in the sexual reproduction. We all know what do you mean by asexual and sexual reproduction. Okay, we have done in chapter number 8. So when organisms reproduce, the offsprings show minor variations due to inaccuracies in DNA copying. जब DNA copying होता है उसमें कुछ inaccuracy के कारण, कुछ error के कारण थोड़े से variations होते हैं. These variations are less in asexual reproduction and more in sexual reproductions. Some variations are useful variations. Okay, out of all these variations, some are useful variations and they help the organism to adjust to the changes in the environment. Okay, कुछ variations useful होते हैं. क्यों? Because they help the organisms to adjust themselves in the changing environment. But some variations do not help the organism to adjust to the changes in the environment and they may die and become extinct. तो कुछ वेरिएशंस अच्छे होते हैं जिसके कारण ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट में, बट सम वेरिएशंस विच टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर नॉट useful, are not helpful to them, and they may die because they cannot adjust themselves in the environment and they may die and become extinct. Okay, now let us discuss the rules for inheritance of characters. Okay, characters means what? Traits. Okay, let us discuss the rules for inheritance of characters. What are the rules? Inheritance means passing of characters, passing of characters from the parent to the offspring. That is called inheritance of characters.
तो ये जो कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से लेके न्यू यंग वन में, उसके कुछ रूल्स है, हाउ आर द कैरेक्टर्स इनहेरिटेड. So characters are transferred through genes present in the DNA molecules in the chromosomes present in the nucleus of the cell. Yes students, as I have already informed you that each and every cell consists of nucleus. Inside the nucleus chromosomes are present. On chromosomes DNA molecules are present, and DNA molecules are made up of what? Genes. DNA molecules are made up of genes. Okay. The inheritance of characters is due to the fact that both the father and the mother contributes equal amount of genetic material to the child. The inheritance of characters is due to the fact that both the father and mother contributes equal amount of genetic material to the child. So for each trait there are two factors, one from the father and one from the mother. We all know that when a new offspring develops, the characters, the new offspring gets the characters from both, from mother as well as from the father. जो न्यू यंग वन होता है उसके पास मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं. ओके. And these rules of inheritance were studied by a famous scientist known as Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel, he conducted experiments with the garden pea plants. उसने एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया? गार्डन पी प्लांट्स, एंड डिटरमिन द रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड्स. ओके. गार्डन पी प्लांट्स, पी प्लांट कौन सा होता है? मटर का जो प्लांट होता है ना स्टूडेंट्स, वो. ओके, इट्स अ ग्रीन पी. ओके, तो उन्होंने गार्डन पी प्लांट लिया और उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके ही फ्रेम्ड द रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स. तो लेट अस सी विच एक्सपेरिमेंट्स ही कंडक्टेड. ओके. So in this topic, our first topic is when plants have one pair of characters. When the plants have only one pair of characters was crossed. Okay, and what is that character? Example, tall and short plant. Tall and short plant. What did scientist Gregor Johann Mendel did? He selected pea plants having one pair of characters. उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट कर लिया जिसमें एक ही पेयर ऑफ कैरेक्टर्स है, अ टॉल पी प्लांट एंड अ शॉर्ट पी प्लांट. ओके, अ टॉल पी प्लांट एंड शॉर्ट पी प्लांट. ही सिलेक्टेड प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट पी प्लांट्स. ओके, प्योर टॉल था और प्योर शॉर्ट पी प्लांट्स उसने सिलेक्ट किए. व्हाट डू यू मीन बाय प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट प्लांट्स? प्योर टॉल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ बोथ द ट्रेड्स, कैपिटल टी, ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर्स. जो उसने प्योर टॉल प्लांट सेलेक्ट किया उसके दोनों ट्रेड्स कैपिटल टी थे, और जो उसने प्योर शॉर्ट प्लांट सेलेक्ट किया उसके दोनों ट्रेड्स स्मॉल टी थे. एंड क्रॉस पॉलिनेटेड विद देम, उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन किया. स्टूडेंट्स, वी आर रेफरिंग टू द फर्स्ट पिक. यहाँ पे 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स है, इसमें पहला वाला पिक हम देख रहे हैं. ओके, एंड इफ़ यू वांट मोर क्लियर पिक यू कैन रेफर टू द फिगर 9.3. फिगर 9.3 ऑन पेज नंबर 144 ऑफ योर NCERT टेक्स्ट बुक. ओके, पेज नंबर 144 फिगर 9.3 आप देख सकते हैं. उसमें एक टॉल प्लांट है और एक शॉर्ट प्लांट पहले इनिशियली लिया. टॉल प्लांट कंसिस्ट ऑफ बोथ कैरेक्टर्स कैपिटल टी, that is it is a pure tall plant, and short plant consists of characters small t, which means it is purely short plant. Okay, when cross pollination was done between them, then in the F1 generation, that is first generation, all the 4 plants were tall plants. सारे 4 के 4 plants क्या थे? tall थे. He obtained all tall plants in the first generation, and all tall plants consisted of the traits capital T small t. So these were hybrid plants. ये hybrid plants जैसे हो गए थे जिसमें traits क्या थे? capital T और small t. Okay, but फिर भी वो दोनों चारों के चारों क्या थे? tall ही थे. Okay, but the traits were capital T and small t. बट अभी ये जो फर्स्ट जनरेशन में जो 4 प्लांट्स आपको मिले ना, ओके, इनके बीच में आप क्या करो, इनमें से कोई भी 2 प्लांट सेलेक्ट करके इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं. When the first generation plants were self pollinated, इनमें से कोई भी 2 प्लांट्स लेके उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करो. He obtained that tall and dwarf plants in the ratio 3:1 in the second generation. आप देख सकते हैं कि इसका सेकेंड फिगर जो है, ओके, इन द टेक्स्ट बुक यहाँ पर नीचे की तरफ, फर्स्ट फिगर में नीचे की तरफ, पहले हमने क्या देखा कि एक प्योरली टॉल और एक प्योरली ड्वार्फ लिया और उससे जो 4 प्लांट्स हमको मिले ऑल वेर टॉल.
बट इसमें से 2 प्लांट्स हमने लेके जब क्रॉस ब्रीडिंग किया तो वी सॉ दैट 3 प्लांट्स वे टॉल एंड 1 वाज ड्वार्फ. It means 75% plants were tall and 25% plants were dwarf in the second generation. And out of this all tall and dwarf plants, the one plant was totally purely tall. Means it consisted of the trait capital T capital T. एक ही ऐसा प्लांट था जिसमें कैपिटल टी ट्रेट था. बाकी 2 प्लांट्स ऐसे थे जो हाइब्रिड थे. मीन्स जिसमें ट्रेट क्या था कैपिटल T स्मॉल t. 2 plants had the hybrid tallness. Okay, so the traits were capital T and small t, and one plant was purely dwarf short plant and its trait was small t. So the ratio of different types of plants were 1 is to 2 is to 1. 1 is to 2 is to 1. 1 is purely tall, 2 hybrid tall and 1 is purely dwarf. Okay, तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट जनरेशन में चारों के चारों प्लांट्स क्या थे, टॉल थे, लेकिन उनके ट्रेट्स क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी. सो द ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी ट्रेट था और प्लांट सारे टॉल थे. मीन्स कैपिटल टी इज द डोमिनेंट ट्रेट. ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये अपने कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करता है. सो इट इज डोमिनेंट ट्रेट. एंड द ट्रेट विच इज सप्रेस्ड, जो दब गया, जो कैरेक्टरिस्टिक्स दब गया, उसको बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट. तो कौन सा रिसेसिव ट्रेट है, स्मॉल टी इज द रिसेसिव ट्रेट, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में स्मॉल टी दब गया है ना. सारे प्लांट्स लंबे ही निकले, भले उनमें ट्रेट्स था कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन चारों के चारों लंबे प्लांट्स थे. It means that the trait that is expressed in the first generation is called the dominant trait and the trait that is suppressed in the first generation is called the recessive trait. Okay students? So far we have discussed regarding the pea plant showing only one characteristic, that is tallness and dwarfness. But what happens when the pea plant showing two different characteristics are bred with each other? अभी 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पी प्लांट लेते हैं और उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं. ओके, तो लेट अस सी नाउ व्हाट हैपेंस, है ना, व्हेन अ प्रोजेनी ऑफ अ टॉल प्लांट विथ राउंड सीड्स एंड अ शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल सीड्स लुक लाइक. हमने क्या लिया, एक टॉल प्लांट विथ राउंड सीड लिया, है ना, मतलब टॉल प्लांट है और राउंड सीड्स है, और एक शॉर्ट प्लांट लिया और रिंकल सीड्स है. मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ना, एक टॉल शॉर्ट और दूसरा राउंड और रिंकल सीड्स. टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट, राउंड और रिंकल सीड्स, है ना. वी आर रेफरिंग टू द सेकेंड फिगर ऑन द स्क्रीन, है ना. फर्स्ट वाला फिगर हमने एक्सप्लेन कर दिया, अभी हम सेकेंड फिगर हम लोग स्क्रीन पे एक्सप्लेन कर रहे हैं. ओके, व्हाट वी हैव टेकन अ टॉल प्लांट विथ राउंड सीड एंड अ ड्वार्फ प्लांट विथ रिंकल सीड्स. ओके, तो व्हाट वी कैन सी दैट इन द F1 जनरेशन दे आर ऑल टॉल एंड राउंड. जो पहला जो पेरेंट कंपाउंड है, जो पेरेंट वाले जो प्लांट्स है, P लिखा है, P फॉर पेरेंट, F1 फॉर फर्स्ट जनरेशन एंड F2 फॉर सेकेंड जनरेशन. तो जो पेरेंट्स है दे आर ऑल टॉल एंड राउंड. पहला वाला जो पेरेंट है वो पूरा टॉल है और राउंड है, और दूसरा पेरेंट जो है वो क्या है, शॉर्ट और रिंकल्ड है. ओके, तो टॉलनेस एंड राउंडनेस are the dominant traits, but what happens when these F1 progeny are used to generate F2 progeny by self pollination? हमने जब पहले वाले पेरेंट्स के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग किया तो आपने F1 जनरेशन में देखा कि सारे के सारे प्लांट्स क्या थे, टॉल और राउंड थे. सारे के सारे प्लांट्स क्या थे, टॉल थे, और इनके सीड्स क्या थे, राउंड थे इन द F1 जनरेशन. बट F1 जनरेशन में से कोई भी 2 प्लांट्स लेके उनके बीच में जब क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, व्हेन वी डू द क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन एनी 2 प्लांट्स ऑफ द F1 जनरेशन, then in F2 generation we can see that out of all the plants 75% were what, tall and round seeds, and 25% were of the short and wrinkled seeds. That is 3:1 रेशियो था. एंड अगर आप 4 प्लांट्स ले ले तो 3 प्लांट्स उसमें से टॉल और राउंड थे और एक प्लांट क्या था, राउंड और रिंकल्ड था. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द सेकेंड एक्सपेरिमेंट वेयर ही टुक 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक टॉल और शॉर्ट वाला और एक राउंड और रिंकल्ड सीड्स वाला. ओके.